जय जगन्नाथ, जय श्री राम. Friends, this is Basudev Panda. Welcome to Master English. पिले एक्स रेगुलर पिलांकर गोटे क्वेरी थिला सर एक्स रेगुलर पिलांक पई भी गोटे अधे क्लास करंतु तो सही एक्स रेगुलर पिला मानक पई एटा स्पेशल सेशन एक्स रेगुलर बोली नुह पिले एटा हम रेगुलर पिला भी हम क्लास करि परिबा कारण एठी जो प्रश्न आसीबो सेही प्रश्न गुडी के मध्य 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न भितर आसीबार संभावना अछि तो 30 टा MCQ आम डिस्कशन करिवा सिलेक्शन सेट 1 एक्स रेगुलर पिलांक पई आउ बुझिबा व्हाई एंड हाउ इंग्लिश. ओके तो जो माने जॉइन करछ फटाफट शेयर कर दवा वीडियो टी संग मान के सहित जा फल से माने जॉइन करि परिबे. ओके आउ रेगुलर पिले भी आमे केते हमर रिवीजन हे जियो पिले आमे जदी क्लास करूचे आमे भी ट्राई करिबा MCQ गुडी कर आंसर दवा पई. ओके एटा बोथ रेगुलर एक्स रेगुलर समस्त पई गोटे प्रकार प्रैक्टिस रेगुलर पिलांक पई रिवीजन आउ एक्स रेगुलर पिलांक पई कोन सिलेक्शन. ओके सो प्रथम प्रश्न जीवा बेले फर्स्ट क्वेश्चन होजी ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ग्रैंडमदर वाज याकू देखो याकू 2 मार्क केमती करा जाय परबो व्हेन ग्रैंडमदर फील डिस्टर्ब एमती जदी करि दवा एटा 2 मार्क के प्रश्न हे जीवो बेले. So, grandmother was disturbed when options are the writer choose a single room for him. Option B, he went abroad. C, he studied music. D, he went to school by bus. ये चारोटी ऑप्शन अछि बेले कोटा ठीक उत्तर होबा कहलो. The right answer would be when the writer studied music. काहे कि because according to the grandmother music had lived association in the monopoly of harlots and beggar. Yes or no? So that's why when the writer announced that he is going to study music, she felt disturbed. Okay, Lipsha. Yes, beta. No. He went abroad. Auchi bhul uttara, ठीक उत्तर हवा. When he studied music, जेतेबेले से music पढ़िले. परवर्ती प्रश्न देखिबा 2 नंबर. The custom of roll call at Eton is that roll call माने the custom of roll call on examination chapter आइज बिले. At Eton is that the एटा जदी हमें 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न रे कन्वर्ट करिबा एटा हे जीवो कोन what is the calling of roll at Eton. So it अछि the custom of roll call at Eton is that the students option A say yes sir. B lift their heads. C file past master. D bow head to the master. ए ओची तमरा चारोटी ऑप्शन हमें जानि थिबा हमरो कोन इटन आउ हारो रे 2 प्रकार रोल कॉल रा व्यवस्था थिला नहीं से 2 प्रकार रोल कॉल व्यवस्था एठी पतरा जाई हमको इटन रा जो व्यवस्था थिला से इटन रा व्यवस्था विषय तो इटन रे से माने कोन करथिले दे फाइल पास्ट द मास्टर. सो ऑप्शन सी होजी ठीक उत्तर है द बॉयज फाइल पास्ट ए मास्टर व्हेन देयर नेम्स आर कॉल्ड. सो ऑप्शन सी यस लिप्सा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Question number 3 को जीवा पिले Wayans was disqualified 2 times because ये एटा हमरो रेगुलर पिलांकर केमते प्रश्न आसे मु सेटा भी कहि दोछि मुझे हेतु कहू जे एटा एक्स रेगुलर पिलांक पई ता सहित रेगुलर पिलांक पई. ओके तो रेगुलर पिलांकर आसीबो why did Owens disqualified 2 times. How did Owens disqualified 2 times. ओके और why did काहे कि से 2 थरा डिस्क्वालीफाई है ए जो प्रश्नटा. So option A, he paid much attention to Hitler's words. Option B, he jumped far behind the checkerboard. C, he was terribly angry. And option D, all the above. Option 1, he paid much attention to Hitler's words. Option B, he jumped far behind the checkerboard. Option C, he was terribly angry. Lipsha कहला option B. Option B होची he jumped far behind the checkerboard. एठी कहला प्रश्नटी थिला Wayans was disqualified 2 times because all of the above. काहे की कहूची he paid much attention to Hitler's words सेही दिपाई तांको माइंड रे एंग्री थिला. he jumped far behind the checkerboard yes jump करूथिले. he was terribly angry से रागी थिले. तो तीनटा जाका ऑप्शन ठीक अतः ऑप्शन डी होची बोले ठीक उत्तर all of the above. क्वेश्चन नंबर 4 की जेबा क्वेश्चन नंबर 4 होची before taking admission into Harrow on examination आसी गला पिले. Before taking admission into Harrow school, the writer was reading in which school? Kothi se padutile? Where he was studying? Option A, public school. B, Eton school. C, Cambridge school. Reed school. तो यार 2 मार्क के प्रश्न जदि आसे केमति हबो what is the previous school of Winston Churchill? What is the name of the previous school of Winston Churchill?
2 मार्क विशिष्ट प्रश्न जदि पैसेज रे आसे तो ताले एठी उत्तर कोन हबो पिले यस इटन स्कूल नहीं इटन स्कूल रे हारो स्कूल को आसिया पूर्वरु से इटन स्कूल रे पढुतले इटन होची ठीक उत्तर देवशिष यस बी होची ठीक उत्तर जे पिले परवर्ती प्रश्न भाग परवर्ती प्रश्न कोन टुमारो इज व्हाट काउंट मींस टुमारो इज व्हाट काउंट मींस आसी गला माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज टुमारो इज व्हाट काउंट मींस ऑप्शन ए टुमारो will play better b tomorrow is the final c tomorrow performance shall be counted and d prepared for tomorrow's match एटी कोटा हवा कोआला tomorrow is what counts तार अर्थ होची tomorrow होची important आम पय तो एटी tomorrow is what counts अर्थ कोन ऑप्शन ए tomorrow you will play better ऑप्शन बी tomorrow is the final c tomorrow's performance shall be counted d be prepared for tomorrow's work आयुष्मान कहला c होची tomorrow's performance shall be counted okay tomorrow's performance shall be counted and okay कहला आयुष्मान कहला c बेटा you know tomorrow is what counts means you know option b tomorrow is the final tomorrow is the final we should go for option b काहे कि फाइनल मैच टा गुरुत्वपूर्ण क्वालिफाइंग राउंड टा गुरुत्वपूर्ण नुह तो तेणु एठी कहैछि जे आसंता काली होछि फाइनल और फाइनल रे हबो सेटा ही इंपोर्टेंट सो ऑप्शन बी टा होछि यस लिप्सा ऑप्शन बी टा होछि बोले ठीक उत्तर परवर्ती प्रश्न को जीवा द कस्टम ऑफ रोल कॉल एट हारो इज दैट द स्टूडेंट्स आमे पूर्व रे पढिथिले कुडा हमर जो इटन रो रोल कॉल विषय एठी आसी गला तमरो कुडा हारो रो रोल कॉल से माने कोन करथिले बिले the boys stand in a cluster then file past a master when their names are called yes or no so ठीक उत्तर कोन हबो the custom of roll call at harrow is that the students lift their hats bow head to master file past the master say yes start to the teacher it कोडा हबो पिले they file past a master custom of eaten पिले मु कस्टम ऑफ पिटन रो उत्तर भूल कहिदली मु भूल कहिदली सेटा होची ठीक उत्तर हबो लिफ्ट देयर हेड्स हबो मु भूल कहिदली सॉरी तो जते बेले मु हारो इटन भितरे मु माने जोटा कहिबा कथा सेटा भूल कहिदली सेही समय रे तो एठी ठीक उत्तर हबो कोन फाइल पास्ट द मास्टर जते बेले से माने टीचर नउथिले स्टेयर केस ऊपर ठिया आइग्री सेही समय रे कोन करथिले they file past the master when their names are called so next jiba pile next question hoche grandmother was distressed kote thila disturbed ebe bartaman sigala distressed grandmother was distressed because kai ki grandmother was distressed because the writer studied in English school option b he studied music c the English school taught science d there was no teaching about God in English school so grandmother was distressed काहे की डिस्ट्रेस थिला प्रथम तो डिस्टर्ब थिला म्यूजिक पाई तो डिस्ट्रेस कोन पाई थिला से डिस्ट्रेस कोन पाई थिला ग्रैंडमदर वाज डिस्ट्रेस व्हाई व्हाट द रीजन वाज ऑप्शन डी देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड इन इंग्लिश स्कूल लिप्सा आई एग्री so because there was no teaching about God and scripture in the English school कारण सेठी इंग्लिश स्कूल रे भगवान के विषय के पढ़ा हो नथिला एडी ऑप्शन 8 द राइटर स्टडी इन इंग्लिश स्कूल भी लागी पारे तुमको बट द वेरी रीजन वाज देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड इन इंग्लिश स्कूल दैट्स व्हाई शी फेल्ट डिस्टर्ब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा टू ग्रैंडमदर म्यूजिक हार्ट जेजेमा पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जेजेमा पई म्यूजिक कोन थिला व्हाट वाज म्यूजिक व्हाट वाज ही थिंकिंग अबाउट म्यूजिक so to grandmother music had option a great power on life b lewd association c appeal to her d changed her life god bless kana तो परवर्ती प्रश्न में पे उत्तर दबा टू ग्रैंडमदर म्यूजिक हार्ट जेजेमा पई म्यूजिक कोन थिला बेले आयुष्मान कहला बी ल्यूड एसोसिएशन बेटा ल्यूड एसोसिएशन होची करेक्ट कारण अकॉर्डिंग टू द ग्रैंडमदर म्यूजिक हार्ट ल्यूड एसोसिएशन इट इज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स एंड बेगा नहीं इट इज द मोनोपोली माने एक चाटिया अधिकार वेश्या और नाचवाली मानकर एक चाटिया अधिकार एटा छोट लोक मानकर काम एकता से कहउतले सबले सो ल्यूड एसोसिएशन होजी करेक्ट ऑप्शन बी नहीं सो याको जदि 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न हमरा आसीबो कोन हबो व्हाट वाज ग्रैंडमदर्स व्यू अबाउट म्यूजिक और ऑन म्यूजिक सॉरी
व्हाट वाज ग्रैंडमदर्स व्यू ऑन म्यूजिक ए भलिया 2 मार्किया प्रश्न भी आसी पारे मु सेही जिंस कहूची माने एटा रेगुलर पिला मानकर इंग्लिश रिवीजन होची आउ आमे एक्स रेगुलर पिला मानकर एमसीक्यू प्रैक्टिस करूचे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिले लॉज लॉन्ग हेल्प्ड ओवेन्स इन द ओलंपिक फील्ड बिकॉज क्वेश्चन देखो पिले व्हाई डिड लॉज लॉन्ग हेल्प जेसे ओवेन्स इन द ट्रायल ट्रायल और ओलंपिक ट्रायल्स एटा होची 2 मार्किया प्रश्न का मानक पई रेगुलर पिला मानक पई 1 मार्किया प्रश्न का पई MCQ का पई एक्स रेगुलर पिला पई लॉज लॉन्ग हेल्प्ड ओवेन्स इन द ओलंपिक फील्ड बिकॉज व्हाई बुझियला तो कारण काहे के से हेल्प कले ऑप्शन ए ही वाज अफ्रेड ऑफ ओवेन्स ऑप्शन बी he disliked Hitler's childish words C he had a true sportsman spirit D he was kind and helping ठीक उत्तर कौन लॉज लॉन्ग हेल्प्ड ओवेन्स इन द ओलंपिक फील्ड बिकॉज ऑप्शन ए he was afraid of ओवेन्स B सुधांशु गला D होची he was kind and helping D टा भूल उत्तर काना गला C was he had a true sportsman spirit great very good बहुत बढ़िया so चैतन्य परिडा C okay ताले पहले सी होची ठीक उत्तर बिकॉज ही हैड ए ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलुआड़ मनोभाव प्रदर्शन करतले ही हैड ए ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दैट्स व्हाई हु लॉज लॉन्ग हेल्प जेसे ओवेन्स टू क्वालिफाई इन द ट्रायल्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ग्रैंडमदर वाज अनहैप्पी अबाउट इंग्लिश स्कूल एजुकेशन बिकॉज परवर्ती प्रश्न हम पढुतले ग्रैंडमदर वाज अनहैप्पी अबाउट इंग्लिश स्कूल एजुकेशन बिकॉज Option A, it will spoil the writer. B, she could not help him with his lesson. Option C, English was a foreign language. D, none of the above. प्रश्न कौन grandmother was unhappy about English school education. काहे की से खुशी थिला because कारण कौन Option A, it will spoil the writer. Option B, she could not help him with his lesson. C, English was a foreign language. D, none of the above. तो बिला कौन C कहले सीटा कौन करे सीटा होचे इंग्लिश वाज फॉरेन लैंग्वेज विषय तार ज्ञान देला सुशांत संधू ऑप्शन बी होचे बेटा सी कुड नॉट हेल्प हिम विथ हिज रिलेशन यू आर करेक्ट दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिकॉज शी कुड नॉट हेल्प द राइटर विथ हिज रिलेशन दैट्स व्हाई शी वाज नॉट हैप्पी ओके पहले नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान ठीक पोएट्री सेक्शन को जीवा ये थिला प्रोज सेक्शन पोएट्री सेक्शन को जीवा ओके फुटप्रिंट्स मींस चैप्टर होची ए सम ऑफ लाइफ फुटप्रिंट्स मींस व्हाट डू यू मीन बाय फुटप्रिंट्स 2 मार्क विस्ट प्रश्न व्हाट डू यू मीन बाय फुटप्रिंट्स से बोला एटी असला फुटप्रिंट मींस ऑप्शन ए गुड एग्जांपल बी डिपार्टिंग द वर्ल्ड सी वर्किंग हार्ड डी बी हम्बल व्हिच इज करेक्ट गुड एग्जांपल डिपार्टिंग द वर्ल्ड वर्किंग हार्ड बी हम्बल कोटा ठीक हो बोले फुटप्रिंट्स कहले कौन बुझ काना गला बी होची डिपार्टिंग वर्ल्ड होची पिला बोल उत्तर ठीक उत्तर कौन सो फुटप्रिंट्स स्टैंड फॉर एग्जैक्टली ऑप्शन ए गुड एग्जांपल एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करबा फुटप्रिंट्स कहले हम समस्त जानथिबा उदाहरण नहीं तो फुटप्रिंट्स मींस गुड एग्जांपल ऑप्शन ए टा करेक्ट चैतन्य परिडा यस बेटा यस एटा होची ठीक उत्तर परवर्ती प्रश्न देखिबा द पोएट वंडर्ड लोनली लाइक ए डैश डेफोडिल्स आज गला प्ले डेफोडिल्स आज गला कोन प्ले द पोएट वंडर्ड लोनली लाइक ए डैश द पोएट वंडर्ड लोनली लाइक ए डैश ऑप्शन ए डेफोडिल स्टार इन द स्काई क्लाउड शिप ओके I wander lonely as a cloud that floats high over vales and hills. At once I saw a crowd, a host of golden daffodils. मन पड़ जाए से स्टांजा गुड़ाक कना गला क्लाउड चैतन्य गला क्लाउड होची ठीक उत्तर ऑप्शन कहबार आवश्यकता नहीं तो ठीक उत्तर द पोएट वंडर्ड लोनली लाइक ए क्लाउड नहीं मिले क्लाउड परवर्ती प्रश्न देखिबा बाइबुक ऑफ लाइफ सेम ऑफ लाइफ रो आ गोटे प्रश्न आसला बाइबुक ऑफ लाइफ मींस बाइबुक ऑफ लाइफ कहले कोन बाइबुक ऑफ लाइफ कहले कोन बाइबुक ऑफ लाइफ मींस ऑप्शन ए लाइफ इज लॉन्ग बी लाइफ इज शॉर्ट ऑप्शन सी लाइफ इज ब्यूटीफुल डी लाइफ इज मीनिंगफुल बाइबुक लाइफ कहले कोन करे बाइबुक कहले कोन ए शॉर्ट टेम्पररी कैंप यस और नो ए शॉर्ट टेम्पररी कैंप बाइबुक कहले ए शॉर्ट टेम्पररी कैंप ताहले इट इज शॉर्ट शब्दटा समीर बारिक कहला बी होची लाइफ इज शॉर्ट वेरी गुड यस यू आर करेक्ट बेटा योर एप्रिसिएशन इज वेरी गुड सो बाइबुक ऑफ लाइफ मींस लाइफ इज शॉर्ट जीवनटा छोट पिले परवर्ती प्रश्न देखिबा पिले
Question number 4. What did the sick man's wife say to father when he saw him? What did the sick man, ballad of Peter Gilligan asila. So what did the sick man's wife say to father when she saw him? कौन कहला? गरीब लोगों स्त्री कौन कहला पिले? Option A. Life is long. B. Life is short. Sorry. Why didn't you come last night? Option A. B. My husband died last night. C. Father, you come again. D. I would not open the door for you. Kana कहला? Father, you come again. Yeah, father, you come again. This is the right answer. This is the right answer. Father, you come again. Option C is the right answer. The lady say, father, you come again. अपना उत्तर आसी गले. So option C हो चुके ठीक उत्तर. परवर्ती प्रश्न बुझिबा. We should make footprints because. Same apply bro. आउ गोटे प्रश्न. कोन? We should make footprints because आमे सुंदर उदाहरण तैयारी करिबा कोन पाई बिले. Why should we make footprints? Option A, will get money, paisa paiba pai. Option B, will get honor, samman paiba pai. C, will be praised, samman paiba pai. D, other will see it and take heart. अलगा लोको देखिकी याकू सिखिबे. कोटा ठीक उत्तर हबो बिले. Which is the right answer? We should make footprints because same apply. ठीक उत्तर कोन? ठीक उत्तर होची love you सुशांत. ठीक उत्तर होची बिले yes because other will see it and take heart. Option D. दीपक शाहू करेक्ट बेटा. सुशांत बी टा भूल हो रे बाबा. बी रसी we will get honor आमे सम्मान पाइबा पई ना. आमे से जो उदाहरण सृष्टि करिया को जी ते सम्मान पाइबा पई नो कि पैसा पाइबा पई नो एबले उदाहरण सृष्टि करो जहां लोक देखि कि people will see it, they will learn it, they will take heart to work again. So option D is correct. परवर्ती प्रश्न देखा. A fallen and shipwrecked brother means. A forlorn stands for further alone, shipwrecked कहले वो ship is being wrecked. So a forlorn and shipwrecked brother means forlorn और shipwrecked brother कहले कौन कहले? Option A man failed in life. जीवन रे परास्त हो गया दिवा फेल हो गया मनुष्य. Option B, a man in distress दुख करथिबा जणा मनुष्य. Option C, a man harassed in life. जीवन रे माने harassed हो जाइथिबा जणा मनुष्य. एवं option D, all the above. कोटा ठीक उत्तर. Which is correct? The correct answer will be all the above. Is शब्द तक. माने a man who is failed in life, a man in distress, a man harassed in life, all the above. शब्द जाको हबो पिले a forlorn and shipwrecked brother रो अर्थ. परवर्ती प्रश्न देखिबा. The sick man's wife told father that. से रुग्ण लोकटिर स्त्री काहाकू कहला? Told father. Father कहले पीटर गिलिगन. पीटर गिलिगन को कोन कहला? Option A, her husband was sick. जे ताका स्वामी रुग्ण अछंती. Option B, her husband was at the 11th hour. Last time तांगर अछि. Option C, her husband died last night. तांको स्वामी मरि गले. Option D, God took her husband. Which is correct? Which is correct? ठीक उत्तर हो जे बिले yes. The sick man's wife told father that her husband died last night. जे तांगा तार स्वामी last night माने घंटे आगरो last night रे मरि गले. Her husband died last night. Option C होची ठीक उत्तर. Option C is the correct answer. Her husband was at the 11th hour. एटा सिगमेंद्र वाइफ कोइ नथिला. से जो खबर पठैथिले से कहिथिले पिले. ओके देखिबा परवर्ती प्रश्न. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पिले? हां all once Wordsworth saw. Daffodils चैप्टर आसिला पिले प्रश्न. All once Wordsworth saw. हठात एकाले के वर्ड्सवर्थ देखिले. विलियम वर्ड्सवर्थ देखिले. कौन देखिले? स्टार्स, क्लाउड्स, डेफोडिल्स, वेल्स एंड हिल्स. कौन देखिले पिले? वर्ड्सवर्थ हठात कौन देखिले? इट इज ऑप्शन सी, डेफोडिल्स. एट वंस वर्ड्सवर्थ saw daffodils. So option C टा होची पिले ठीक उत्तर. नहीं परवर्ती प्रश्न देखिबा. The sick man's wife said that her husband died as merry as tears. चैतन्य परिवार. डेफोडिल्स ठीक उत्तर बेटा. परवर्ती प्रश्न होची. The sick man's wife said that her husband died as merry as tears. कहा भली शांति रे मरि गले बोली माने से रुग्ण लोकर स्त्रीटी कहला पिले. ऑप्शन ए, priest, saint, holy man, word. Option priest, saint, holy man, word. ठीक उत्तर होची या as merry as a word. Option D, माने गोट पक्षी भलिया शांति रे मरि गले बोली कहा जाय छै. ए वर्ड होची ठीक उत्तर. परवर्ती प्रश्न देखिबा.
When the poets saw the daffodils, they were dancing in dash. When the poets saw the daffodils, they were dancing in dash. Option A water, B garden, C air, D hochi breeze pile. When the poets saw daffodils, the daffodils dancing in dash. Option gudi kala water, garden, air or breeze. Lisha kala D. Very good beta. Lisa, welcome to the class. This will be helpful for all of you to revise your English. That's why this lesson is going on. So secondary pila भी हमें दबा दरकार आंसर पिला तो ठीक उत्तर होचे पिला ब्रीज ब्रीज होचे ठीक उत्तर मंद मंद पवन बहुतला उसे पवन रे से माने नाचुतिले वर्तमान टिके हमें नॉन डिटेल सेक्शन को जिबा पिले हमर प्रोज सरी जाईची देन हमर पोएम सरी जाईची वर्तमान नॉन डिटेल सेक्शन को जिबा स्टीव जॉब्स वाज अफेक्टेड बाय आइडियाज परवर्ती प्रश्न Steve Jobs was affected by ideas. Steve Jobs को को रोग होइतला पिले ऑप्शन ए एड्स, बी कैंसर, सी ट्यूबरकुलोसिस, डी हार्ट अटैक. Steve Jobs was affected by ideas. AIDS, cancer, tuberculosis, heart attack. Which is right? Sushant Boykara, D. Option C, Sushant. Cancer. Yes, it was pancreatic cancer. Yes or no? Yes. कैंसर होची ठीक उत्तर बी होची ठीक उत्तर तो स्टीव जॉब्स कोन हितला कैंसर हितला परवर्ती प्रश्न देखिबा he had never faced a situation like this. What was the situation? The doctors were asigala pile the doctors were asigala रेवती किशन सी मोनालिसा मानते सी दीपक साहू सी होची ठीक उत्तर सी टा होची भूल उत्तर ठीक उत्तर दिला कैंसर पिले ऑप्शन बी ओके तांको ट्यूबरकुलोसिस तो हे नथिला ना तो परवर्ती प्रश्न दिला he had never faced a situation like this. What are the situation? Dr. Ward Prashna. Option A. Patient was so critical. B. Patient was Gopal. C. His best friend Gopal's life was at text and he would like to know about his condition. D. All the above. Prashna Dila. He had never faced a situation like this. What are the situation? Patient was so critical. B. Patient was Gopal. See, his best friend Gopal's life was at stake and he would like to know about his condition. Lisha Kola, B. Patient was Gopal. You are correct. Patient was Gopal. This was the situation. The tanker best friend, se dino rogo re bed re paditela. Au ei bhole situation se kon karibe? Ei bhole situation se keme face kari nothile. It is B beta. Yes, B is the correct option. Nahi? Okay, Mona Lisa. समीर सीटा होचे भूल उत्तर परवर्ती प्रश्न देखिबा स्टीव जॉब्स हैड डैश कैंसर स्टीव जॉब्स हैड डैश कैंसर स्टीव जॉब्स को कैंसर हितला बेले ऑप्शन ए लिवर ब्रेन पैनक्रियाटिक थ्रोट स्टीव जॉब्स हैड व्हिच कैंसर स्टीव जॉब्स हैड डैश कैंसर ऑप्शन would go liver brain pancreatic and throat option C it is option D Susanta option D that is throat cancer option C होची pancreatic cancer Lisa C होची ठीक उत्तर बेटा pancreatic cancer तांको हेतिला so Steve Jobs had pancreatic cancer yes or no pancreatic is correct परवर्ती प्रश्न mystery of the missing key आपरा गोटे प्रश्न पिले महाराणा was shaking literally because so why was Mr. Maharana shaking literally option A he was afraid of giving speech कारण से भाषण दबा पे डरुथिले ऑप्शन बी मिनिस्टर वाज एंग्री मंत्री रागी जाइतिले सी झंडू had stolen the cap झंडू टोपी चोरी नहीं थिला डी the cap was stolen from his room which is right the correct answer Steve Jobs had yes sorry Maharana was shaking literally because ठीक उत्तर होची ऑप्शन सी because झंडू had stolen the cap कारण होची टोपी चोरी हो जाइतिला टोपी चोरी हो जाइतिला नहीं ऑप्शन सी परवर्ती प्रश्न देखिबा when Steve Jobs was 17 dash came to his mind when Steve Jobs was 17 dash came to his mind जेतबेले तांको 17 वर्ष आइतिला तांको माइंड रे कोन आस्तिला ऑप्शन ए ब्यूटी कॉन्शियसनेस बी डेथ कॉन्शियसनेस सी लव कॉन्शियसनेस डी ड्यूटी कॉन्शियसनेस कोन आइतिला बेले when Steve Jobs was 17 what came to his mind कोन आइतिला ऑप्शन ए ब्यूटी कॉन्शियसनेस बी डेथ कॉन्शियसनेस सी लव कॉन्शियसनेस डी ड्यूटी कॉन्शियसनेस ऑप्शन सी सुशांत सी तो नुह सीटा पूर्ववर्ती प्रश्न उत्तर थिला ए प्रश्न उत्तर कोन हबो बेले से कोन कहितले मने पकेबा ऑप्शन बी
ऑप्शन बी होची डेथ कॉन्शियसनेस यस से कहितले व्हेन आई वाज 17 आई हैड जस्ट रीड अ कोट लाइक दिस if you live every day as if it was your last day one day somehow you mustn't you will do the right thing you will get success so death consciousness option b होची ठीक उत्तर पहले परवर्त प्रश्न डॉक्टर स्वाटर प्रश्न पहले गोपाल learned shubia gopal was afraid of shubia because after his death Gopal was afraid of Shubia because after his death, option A, he will murder his wife. B, he will take the property. C, he will take his wife to court. D, he will threaten his wife and son. Shubia ଆଉ ତା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗୋପାଳ ଡରୁଥିଲା କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ ବି ବିକଜ he was afraid that he will take his property ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ନେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ତ ଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ପିଲେ yes it is option B. Option B, beta. He will threaten his wife and son. Gopal was afraid of Subia because after his death, he will take the property. Question number 7 को जीवा में. Who gave Maharana information about missing cap? Who gave Maharana information about missing cap? महाराणा को मिसिंग के बाबद रे किए इनफॉरमेशन देला सूचना किए देला ऑप्शन ए नरेटर बी पीए सी पीआरओ डी पुलिस ये इनफॉरमेशन देला पहले हु गेव मिस्टर महाराणा इनफॉरमेशन अबाउट मिसिंग कैप इट वाज द नरेटर हिमसेल्फ मनोदास वाज द नरेटर एंड ही हैड गिवन दैट इनफॉरमेशन नहीं ऑप्शन ए नरेटर कहले लेखक क्वेश्चन नंबर 28 Steve Jobs cured from cancer by. Steve Jobs cured from cancer by. Cancer ru kivali arogya paile. Option A, praying to God. B, remaining busy in computer. C, taking medicine. D, surgical operation. Which is correct? Steve Jobs cured from cancer by. Option A, praying to God. B, remaining busy in computer. C, taking medicine. D, surgical operation. Lisha gala D, surgical operation. Operation ko dwara I had an operation and I'm fine now. This is the sentence that is mentioned in your text. So, surgical operation D होची बोले ठीक उत्तर. परवर्ती प्रश्न. Gopal wanted to sign the will to. Gopal wanted to sign the will to. Option A, Bipul Subia. B, settle his property. D, save his wife and son. D, avoid misunderstanding. काहे की गोपाल काहे की will sign करिवा ପାଇଁ चाहूतला ऑप्शन अछि हम पाखरे बी फुल सुबिया बी सेटल हिज प्रॉपर्टी डी सेव हिज वाइफ एंड सन डी अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग सो व्हिच इज करेक्ट गोपाल काहे की साइन करिवा ପାଇଁ चाहूतला गोपाल वांटेड टू साइन द विल बिकॉज़ टू Bipul Subia settle his property save his wife and son avoid misunderstanding option D is avoid misunderstanding. Lisa, which misunderstanding you are talking about, ma? So it would be Gopal wanted to sign the will to settle his property. A property settle करिवा पाए. A property settle करिवा पाए से will sign करिवा पाए चाहूतला. कारण जदि से will sign करिबो नाही ताहले ता पोज्य माने ता पो एवं ता स्त्री से माननको माने संपत्ति सुबिया नै जीवो बोली से भाबुतला. Last question. A drowning man catches at a straw. Who said this? A drowning man catches at a straw. At a ka pai kuha jaichi. It is told for whom? Option A, minister. B, Maharana. C, narrator. D, public relation officer. At a ka pai kuha jaichi. A drowning man catches at a straw. Option A. It's for the minister, for the Maharana. C, narrator, public relation officer. So it is told Sushant. Option C, narrator. Narrator होची भूल उत्तर ठीक उत्तर होची इट इज टोल्ड फॉर मिस्टर महाराणा जतबले माने महाराणा को पई एटा कुआ जाईची ए ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ जतबले गोटे 5 वर्षर पिला तांको इशारा करिची आई सिग्नल्ड हिम एंड ही फॉलोड मी एज अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ ए कथा कुआ जाईची तो ए कथाटा कहा पई कुआ जाईची मिस्टर महाराणा के पई कुआ जाईची परवर्ती क्लास
परवर्ती क्लास 8:15 बेले स्टार्ट हो पिले गेट रेडी को क्लास करबा हिस्ट्री करबा पॉलिटिकल करबा एमआईएल करबा इंग्लिश करबा कोन करबा ता ऊपर मते कहिबो 8:15 बेले क्लास होबो मते कमेंट कर दियो एंड दैट क्लास विल बी देयर सी यू देयर स्टे टू मास्टर इंग्लिश जय जगन्नाथ।